Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan, and we are starting with our first session of interventions. Yeah, today is June 13th, 2026. I like to stamp things with date. In future कभी मैं भी रिकॉर्डिंग देखूं तो मुझे कम से कम याद हो यार इस तारीख को इस सन में मैं ऐसा नजर आता था। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यू मे फाइंड इट यूजफुल टू फॉलो अलोंग एंड टू पे अटेंशन। बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें जो कह रहा हूँ कर रहा हूँ, आई मे नॉट बी वेरी ऑब्वियस, आई मे नॉट बी वेरी यू नो apparent as I'm doing things and talking about things. So if you pay attention, and when you're attending live, so that would be the best thing for you. Figure out, if you're paying attention. So you know, हम बात कर रहे थे कि आप before we started recording, we just had a general chit chat. Just so you are watching it and recording it, wondering ये क्या बात हो रही है अचानक से. So इसलिए so you've not missed anything from the program, from the session. Okay. But हमारा जो एक inner mind, हमारा जो unconscious mind होता है, it connects dots. So uh, आपका जो कॉन्शियस माइंड है दैट मे बी कंफ्यूज्ड अबाउट फ्यू थिंग्स, ये अचानक से कहाँ से कौन सी बात शुरू हो गई। तो इसलिए आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि दैट योर कॉन्शियस माइंड गेट्स सम आइडिया एज वेल। कंफ्यूजन जो होती है, बाय द वे, दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। Sometimes people think confusion is a bad thing. Confusion is not a bad thing. It actually opens up us. It opens you up so you can learn. It's like when we are confused, we want to find an answer. But when you are confused and you want to find an answer, you start searching for something. In that process, you learn something. And in that process, you grow. हम समझ रहे होते हैं कि confusion is a bad thing. No, confusion is a good thing. It's a state of mind. And in fact, the thing is, हर किस्म की state जो है, it's a useful state. Fear जो है, हमारे जो 3 sessions है, हमारा आज का जो first session है, this is about overcoming our fears. हमारा जो अगला session है, that will be about getting confidence, experiencing confidence. और इसकी जो sequence है, it is also on purpose. I like to do things on purpose. तो जो इसकी तीसरा जो सेशन है, that's about resilience. Think of it like this. वो कप पहले वाले जो है वो भरा हुआ है, पहले हम उसको खाली करेंगे। Okay? उसके बाद फिर हम उसमें दूसरी कोई चीज डालेंगे और फिर हम उसको मेंटेन रख सकें, तो उसके लिए we'll make sure कि प्रिजर्व रहे. So that's what these 3 sessions are about. Ideally, it's the best would be that you have all three and you watch them with this specific gap in between. मैं अगर प्राइवेट सेशंस जब लोगों के साथ करता हूँ, तो हमारे जो सेशंस में एक एक हफ्ते का गैप हम रखते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन। सो उस एक हफ्ते के दौरान आप इस सेशन को, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड इट और रिपीट दिस मल्टीपल टाइम्स, इट्स परफेक्टली ओके। यू डोंट हैव टू रिपीट द होल थिंग। हम जब स्पेसिफिक किसी प्रोसेस पे आएंगे, इफ यू जस्ट वांट टू रिपीट दैट प्रोसेस, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। मैं अपनी क्लासेस में एक बात अक्सर कह रहा होता हूँ कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। और प्रॉब्लम अक्सर मैंने देखा है लोगों के साथ जो होती है वो ये होती है कि हमने वी हैव प्रैक्टिस्ड फीलिंग बैड so much that we start believing our feelings, and we start believing कि जो मेरी feeling है, this is how I am. This is not who you are or how you are. You just have a feeling, you know. uh, uh, और फिर होता है कि हम हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, कभी आपने गौर किया हो, लोग कभी भी ये नहीं कहते, यानी किसी को अगर बुखार हो तो कोई ये नहीं कहता जी मैं बुखार हूँ। ओके, किसी के सर में दर्द हो तो ये नहीं कहता मैं सर का दर्द हूँ। दूसरे उसको ही कहेंगे बुखार है, ये सर का दर्द है, बट अपने आप को कोई नहीं कहता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर फीलिंग्स, हम फौरन उसको, अपनी फीलिंग्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ डिफाइन करते हैं। मैं डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू नो मेरे सर में दर्द है और मैं सर का दर्द हूं, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल उसी तरह से मुझे खौफ आता है और मैं खौफ ज़दा हूं, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जिस वक्त हमने
लैंग्वेज में लिंग्विस्टिकली किसी चीज को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम हम उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट अंदाज से करते हैं. सो वॉट एवर योर objective for taking this session is, I want you to first become aware of how you express it yourself, to yourself, or to other people if you do express it to other people. And then I want you to know is, if you say anything like this, I am, you know, your fear, whatever that fear is, you're not that fear. In fact, you're not any of the thoughts you think. You know? In fact, you're not even the body that you live in. You understand? Even when you talk about your body, you don't say, it's like, ye main hu. When you talk about your body parts, you say, ye mera haath hai. ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है. Okay, ये मेरा माथा है. You don't say ये मैं. Have you noticed that? Because you're not this body that you're living in. Okay? And you are not the feelings you have in the body that you are living in. Okay? आप अगर किसी जगह पे हैं, किसी कमरे में हैं, उस कमरे में अगर ठंड है, तो आप मैं ठंड हो गया. ओके, मुझे ठंड लग रही है. और अगर गर्मी, आप ये नहीं कहते जी मैं गर्म हो गया. Okay? मुझे गर्मी लग रही है बिकॉज कमरे में गर्मी है. You're not, you're not the feelings, you're not the emotions you experience. We experience emotions. We are those beings who experience emotions or feelings, और हमारी जो भी feelings और emotions हैं, वो हम नहीं हैं. Okay, understand this. Okay. Now, with this perspective, थोड़ी देर के लिए, I want you to think about whatever it is that you have fear of. And एक चीज ये कि अगर हम इट्स लाइक इफ वी वांट टू मेजर चेंज, इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. सो अगर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अगर आप अपने उस फियर को मेजर करें, जहाँ 0 मतलब इट्स गॉन, 10 इट्स रियली हाई, वेयर विल यू पुट इट? गिव इट ए नंबर. सो वो नंबर जो है आपको, इट विल गिव यू एन आइडिया. नाउ whatever number you have given it, okay, I want you to notice, why did you give it that number? Why do you say whatever number? Let's suppose somebody said it's 7. The intensity of my fear out from 0 to 10, where 10 is at its peak, 0 is not at all. And right now it's 7. Let's suppose if somebody says that. I don't know your number. I'm not even asking people who are attending live. But, if you, whatever number you've given, why did you give it 7? Why not 8? Or 9? Why 7? And like, what do you need to do to increase? And I'm not asking you to decrease it. I'm asking you to increase it. To increase it to 8. Just 1 point. Or 7.5. It's half a point. Or maybe 7.25. Quarter. थोड़ा सा उसको अगर बढ़ाए, राजदारी से रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे. If you just increase it a bit. So, it's, and then slightly even more. And then slightly even more. And then slightly even more. So I want you to take from wherever it is, उससे at least 1 point ऊपर.